It's raining sops in the national capital. Ahead of polls, Delhi Congress has released yet another poll guarantee. Congress has pledged year-long paid apprenticeship, which will amount to rupees 8,500 per month to be paid for jobless Delhi youth. The Congress Yuva Udyan Yojana for poll-bound Delhi. दोनों सरकारें हैं, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है। दोनों सरकारों को पर्याप्त मौका दिल्ली के लोग दे चुके हैं और दोनों सरकारों ने जनता से कोई वादा पूरा किया नहीं है और यहाँ पर टकराव चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सीएम हाउस जितने का है, पीएम हाउस जितने का है, सीएजी रिपोर्ट में क्या आ रहा है। तो ये टकराव और आक्रमण की राजनीति ये दिल्ली में पहले कभी हुई नहीं। जब सरकार कांग्रेस की थी शीला जी की, तब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सब काम ढंग से होते थे। तो इस टकराव और विवाद की राजनीति में जनता पिस रही है, तो हमें लगा हम एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं। इसलिए हमने बड़ा सोच समझकर जो दिल्ली में रहने वाले नौजवान लड़के लड़कियां हैं, शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनकी मदद करने के लिए, उनको संबल देने के लिए योजना का आज घोषणा करी है कि हमें अगर मौका मिलेगा तो प्रति माह हर व्यक्ति को, बच्चे को 8,500 रुपए हम देंगे कंपनीज, फैक्ट्रीज, उद्योग के माध्यम से। Anmol Bali, my colleague, will get us more details on this story. Anmol, can one say that this can be a game changer of sorts ahead of elections for the Congress party? Harshit, as you know, for the upcoming Delhi Vidhan Sabha election, all political parties are trying hard. They are announcing various schemes to attract the voters. And today, Congress announced its third guarantee. Earlier, it was seen on Monday and Wednesday. Congress announced Pyari Didi Yojana and Jeevan Raksha Yojana, where the Congress has promised to provide rupees 2,100 to the women as well as 25 lakh health insurance to the elderly people and the other people in the national capital. And in this third scheme, Congress has promised to provide rupees 8,500 stipend per month as an apprenticeship program for the unemployed educated youth if they will form government in the national capital. While launching the scheme, Deputy Chief Minister and Central Minister Sachin Pilot came down heavily on the Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party. He targeted both political parties and said that what Aam Aadmi Party's tenure as well as Bharatiya Janata Party's rule has given to the people living in the national capital. He also compared Sheila Dikshit days with the Arvind Kejriwal days, and also said that currently national capital is witnessing the politics of blame game, politics of tu meme, and this is Congress ploy to attract the young voters towards the Congress party, which has ruled the national capital for 15 years. But since 2013, the Congress is out, and Congress is using various schemes and various announcements to lure the voters towards them. That's right. Thank you so much, Anmol, for sharing all those details with us. India bloc faces Delhi dilemma. Congress's Sachin Pilot has come out and defended the Aam Aadmi Party Congress fight. Pilot has said that each state has different dynamics. Also goes on to say that India bloc remains extremely strong. देखिए, हर राज्य की अलग रणनीति होती है, अलग लैंडस्केप होता है। पंजाब में चुनाव हुए थे तो आम आदमी कांग्रेस ने आमने सामने चुनाव लड़ा था। बंगाल में चुनाव हुए, अलग परिस्थिति थी। इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनावों के लिए, और जिस मुद्दे को लेकर संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती थी, लोकतंत्र को चुनौती थी, वो आज भी है। केंद्र सरकार आज बीजेपी की है, तो इंडिया गठबंधन पहले भी स्ट्रांग था, आज भी स्ट्रांग है। लेकिन हर राज्य में यूनिट की और समीकरण अलग होते हैं, उसके हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। Amidst reports of there being a rift in the India bloc, cracks widening, Sachin Pilot says that despite the battle that the two parties are entangled in the national capital, you have to understand that there is a lot of state dynamic as well that needs to be understood over here. Remember, there is similar things being said about the India bloc ahead of Maharashtra civic polls as well. Sanjay Raut has said that the Shiv Sena will be going all alone, and that's where the fact that the India bloc is facing more and more questions when with these developments taking place across multiple states.